Namaste to everyone. Today we are doing 15th lecture of our PhD class, and today our special guest is Dr. Priyanka Nayak, who has done BNYS from SVSA University. She has done MSc in Yoga Science, and now she is doing a PhD scholar also here, and she is medical officer and assistant professor in SVSA University. So she is so expert in the therapy, as she is handling all the BNYS intern students also. She is in charge of that. So, so today lecture is very important for everyone. Lots of students they has doubts ki, because you all are taking yoga modules, it's extra. So which kind of yoga module you should select? Really, you should select new module also, and which kind of therapy you have to use in your research. So Dr. Priyanka ma'am will guide to all. So thank you to Dr. Priyanka ma'am for her valuable time. So please ma'am proceed. Thank you, Rahul Bhaiya. I'm audible to everyone. Yes, ma'am. Okay. Everyone can put on your camera, if you are comfortable, because most of time we will be somewhere else. Simply will be attending the sessions. Please. Okay. First, tell me which language you all are comfortable. English, Hindi, which language? Ma'am, Hindi or both? Okay. Hindi. Okay. Okay, I'll explain first in Hindi. किसी को भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, then you can ask me in Hindi. I will explain in Hindi again. Okay. Or sometime बीच में we'll mix. Okay. So first, I had planned class at 5:30, but my PhD exams are going on. That's why it has shifted to 6 o'clock. So thank you for waiting. So first, can anyone tell me how many of you are doing now presently PhD, or how many are already preparing for PhD? Already, how many are doing? Okay. Rohit Kumar, you are doing. राहुल भाई आपका तो चल रहा है already. Okay. So can you tell me your topic? Rohit, you are scientific, you are writing for which life science or Sanskrit or which field? Your project is in which field? I'm audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Who all are writing their synopsis or PhD project on therapeutical? You can Ma'am, unmute and my tell. my topic is not completely like clear because my coursework is going on. Last exams are there, but something related to mantra chanting I will take. Okay. So anyone else who is doing the therapeutic? Yes, ma'am. My topic is effect of integrated yoga module on RRMS, means relapsing remitting multiple sclerosis patient. Okay, nice. Okay. And who else? Why I'm asking? Because when I'll explain that, I'll give that example. So it will help you. That's why. My subject is it is a childhood obesity among the good parents. Okay. Good. Yes, next. Okay, fine. We'll start then.
By knowing the title or by reading the title, आपको क्या समझ में आता है? What you understand from this? What we say yoga therapy? What is the difference between yoga and yoga therapy? Yeah, please. Any of Practices can be used for therapeutic therapy. And when we use yoga as the therapy for the specific diseases and problems, disorders, then it is called as therapeutic yoga. Okay. मैम थेरेपी एक पार्ट है पूरे योगा का, जबकि योगा का मेन जो टारगेट है वो 4 पुरुषार्थ को गेन करना है, जबकि थेरेपी एक बाई प्रोडक्ट है उसमें योगा में, कि जो हमारा परम लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं हैं, बीमारियां बीच बीच में आ जाती हैं, उनको योग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो ऐसे वो थेरेपी के रूप में भी काम करता है। Next, who else can say? See, ma'am, yoga is actually very wide term. All type of people can use. Healthy people who wants to gain spirituality, they can also use. Like different kind of people can use yoga. But as far as therapy is concerned, we target physical or mental health aspect, and according to which we are targeting the either disease or either any psychological disorder or anything. According that, we design as per the symptoms and as per the problems, we design the therapy. In that, normally we include a full module which can include breathing exercise, asanas, pranayam, and meditation, and all parts we include in that. Yes. With that also, it depends on individual. Like sometimes some symptoms, like if I have asthma and you have asthma, mine is a mild stage and your is severe stage. So that time also some of practices we change. We modify the practices. So that we'll discuss. First, we'll discuss about the title. Is everybody is correct? They have told about yoga therapy. Yoga can practice by everyone. Generally, yoga people thinks about like how the only physical practices, but it is not only the physical. When it is converting to therapy, it's not like only those who have disease condition. Any sounds are coming? Background sound? No, ma'am, background. Okay. So whenever we are practicing both physical, mental, emotional, and spiritual level, that one convert as a therapy. Okay. And yoga therapy, it's not only who have disease they will do. Those who have mental problem also, or those who are lifestyle is imbalance, or those who are stressed also, for them they have to practice this. Everyone can see the PPT. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So as we can see in this picture, I have mentioned about the yoga therapy. Why I'm explaining about yoga therapy? Because when you will know the basic information about yoga therapy, what it represents. It represents the three things, as we know. By whenever we are reading about Panchakosha, or when we are reading about the yogic counseling or meditation, or by doing asanas, so that will convert as physical, mental, and spiritual. These three. So, like physical, as we say, is that is जी मैम asana. Ma'am, Yeah. please मैम change the एक्चुअली ये slide. फर्स्ट स्क्रीन पे ये मतलब लाइक टॉपिक पे ही है सिर्फ Okay, sorry. 1 minute. अभी मैं फिर से कर रही हूँ. I think now you can see. Now you can see second slide. Yes, Now you ma'am. can see. Yeah. So these things, these three will compile and that will convert as a therapy. So whenever you are planning for treatment with anyone or planning your project, because we don't have more sources for clinical purpose or like clinical studies. Now gradually it is increasing, the clinical study or experimental study. So in yoga also,
One is theoretical study. Another theoretical study, in that, as you can say, we are doing the literature review, or you are doing only the paperwork part. Like some people are only doing the theoretical studies, and some of are doing the experimental studies. Experimental study means in that study only these things will come. In the experiment also, like some people are doing on yoga spirituality, some people are doing on life science. So when we are doing on life science, yoga for life science, there the yoga therapy part will come. In this, we are doing on human and on the disease case, or if it is in healthy individual also, we are doing their physiological changes of their body. So in that case, yoga therapy will come. Okay, you are clear when you are deciding the topic for your project. Don't get confused. So when you are doing on any mantra chanting, even though if you are doing on mantra chanting also, that will convert as a if your assessment will be as a scientific or a physiological way, that also come under the uh, therapeutic part. But we are not giving the direct yoga IOYT concept. That I'll explain also. What is IOYT concept? So now it is clear for everyone. The therapy part is compile whom we are giving the treatment, both physical, mental, and spiritual way. And the person, it's not only the disease case, but even though for the healthy individual also, we can guide them through the mental level or Manamaya Kosha level. The slide is changing. Next slide. No, ma'am. Not changing. Yes, now it is changed. Now it's changed. So as everyone knows, I think about Panchakosha concept. Any doubt anyone have about Panchakosha concept? Or first time you are knowing the Panchakosha? Please tell me, I will explain. Priyanka ma'am, you can explain because recording is going on YouTube also. YouTube more than Okay. students are basics, huh? So you can also focus on the recording students. Okay. Okay. Other students will see Okay. your Okay. video. Okay. Then. So as you can see the screen, Panchakosha means first this is a, you can say, our Taittiriya Upanishad book. From our ancient book, it has come Panchakosha concept. Panch means, as you know, five. Is in modern science we have medicines. In our Ayurveda we have our three doshas concept. In naturopathy we have Panch Mahabhutas concept. Like same way in yoga also, for curing the disease or to balance the disease, we have this Panchakoshas concept. Okay. In that, we have five koshas, means five, as you can see in this picture, it's showing as a five layers of your body. How the layers, one by one, the layer. Then first, the layer is called Annamaya Kosha. Annamaya Kosha is a physical body. Physical body means like our bones, muscles, internal organs, or you are talking, you are sleeping, or eye blinking, your muscles, your blood flow, everything will come under the Annamaya Kosha range. Okay. Means like the disease. If I have cancer or I have arthritis, that is happening on my Annamaya Kosha level, means my body level. Everybody clear? Next about the Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha means how prana, as you know the Sanskrit term, prana means your breathing, your prana flow. और we say in yogic way, like जब भी कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं उसका प्राण वायु चला गया. प्राण वायु मतलब जो शरीर में जो एनर्जी घूमता है, जो आपका जो फ्लो, आपका breathing process
और एनर्जी फ्लो ऑफ योर बॉडी, जो हमारे शरीर में रक्त संचालन होता है। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। तो हमारे शरीर में जो भी रक्त संचालन, जैसे कि प्राणमय कोशिका को क्या क्या बोला जाएगा, जो भी एनर्जी सोर्सेस मतलब आपके न्यूरॉन्स क्या क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट करते हैं, सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, चारों तरफ देते हैं। पर उससे पहले क्या मेन है? ऑक्सीजन सेचुरेशन। आपका ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में अच्छा होना चाहिए। जब ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज्यादा होता है तो हमारा रक्त संचालन ज्यादा अच्छे से होता है। उसकी वजह से मसल स्पाज्म, जो मसल्स का टाइटनेस होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में जकड़न, जिनको मांसपेशियों में दर्द होता है, बैक पेन होता है या घुटने में दर्द होता है, उनका मांसपेशी क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि मेन रूट क्या है? ऑक्सीजन फ्लो। और उसको हम योगा में क्या बोलते हैं? प्राणा फ्लो। जब भी आप किसी जो योगा बैकग्राउंड से है, उन लोग क्या बोलते हैं? आपका प्राणा ब्लॉक हो गया है, ये एरिया में प्राणा ब्लॉक हो गया, मतलब आइदर इट विल बी एक्सेसिव प्राणा और इट विल बी लेस प्राणा। ओके, ये प्राणायाम का कॉन्सेप्ट है। और प्राणमय कोशा का नेक्स्ट आता है आपका मनोमय कोशा। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कोशा है, क्योंकि आजकल सबके जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं हम हेल्दी है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हेल्दी टोटली, नो प्रॉब्लम इन माय लाइफ। बट फिर आप आधे घंटे के बाद थोड़ा आपको न पता चलेगा ये फैमिली में प्रॉब्लम है, और दे आर वेरी एंग्सियस और वेरी स्ट्रेस पर्सन और वेरी हाइपर एक्टिव पर्सन। तो उनका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कोई भी विटामिन्स या कोई खाना पीना ठीक चल रहा है, सब कुछ चल ठीक है, बट स्टिल व्हाई दे आर गेटिंग डायबिटीज और व्हाई दे आर गेटिंग हाइपरटेंशन, और क्यों वो आप उनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ देयर मनोमय कोशा। हमारे सारे डिजीज का स्टार्टिंग रूट है मनोमय कोशा। जैसे कि अभी मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, इफ आई थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन क्लास और व्हाट इज गोइंग ऑन विद पेशेंट्स, और अगर आप अभी क्लास में सुन रहे हैं, अगर आप भी सोचते हैं और क्या काम है और क्या कुछ करना है, दैट वी से इज ए मल्टीपल थॉट्स एट ए टाइम। ओके, सो दैट ऑल्सो क्रिएट एंग्जाइटी। और कोई भी आप किसी को आप काउंसलिंग कर रहे हैं, एनीबडी विथ एनीवन यू आर टॉकिंग विथ एनी पेशेंट्स, सो डोंट आस्क डायरेक्टली कि आपको स्ट्रेस है क्या, और एनी स्ट्रेस यू हैव, like everybody don't like they will not accept that I have the stress or I am they'll think that they have mental issue. Stress means, so you can convert that on another way, like are you have like you have anxiety, or if you can't ask, like you are you have multiple thoughts, or are you thinks in one time multiple topics, like that way if you ask, that will be more positive way, they will take as a positive way कि आप एक टाइम में बहुत कुछ सोचते हैं क्या, या आप मल्टीटास्किंग पर्सन है क्या। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि उनका माइंड का थॉट प्रोसेस एक टाइम में बहुत कुछ चलता है। जब एक टाइम में बहुत कुछ चलता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, जैसे कि आपका चाहे ऑक्सीजन हो, मसल स्ट्रेंथ हो, आपका ब्लड फ्लो हो, सब कुछ एक एक ही टाइम में बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो उस सब चीजों के लिए हमें सप्लीमेंट ज्यादा लेना है, बॉडी में एनर्जी ज्यादा स्पेंड करना है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस, जैसे कि आपका प्राणमय कोशा और अन्नमय कोशा के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो यहाँ पे मनोमय कोशा ही सारा डिजीज का रूट कॉज होता है। ओके, इसीलिए कोई भी आप योगा मॉड्यूल बनाते हैं या कोई भी पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज। ट्रीटमेंट वी नो कि आस्थमा के लिए प्राणायाम देना है, हाइपरटेंशन के लिए ये योगा देना है, ओबेसिटी के लिए देना है। पर वो ओबेसिटी क्यों हो रहा है, वो अस्थमा क्यों हो रहा है, इतना सारा मेडिसिन खाने के बाद भी क्यों नहीं कम हो रहा है, क्यों ग्रेजुअली डाउन नहीं हो रहा है?
what is the cause behind, and main cause is always maname kosha. Okay, so whenever you are preparing the module also, you have to add maname kosha practice, that I'll explain in the module. Then next comes, so here why I have mentioned, because our physiology, we don't have more strong physiology, yogic science physiology, because हमारा रिसर्च फील्ड बहुत ही कम है हमारे फील्ड में, अभी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. तो जब आपके जो पंचकोशा कॉन्सेप्ट वाइज आप कभी भी एक्सप्लेन करते हैं, तो दूसरे रिसर्च स्टडीज जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड स्टडीज, ब्रेन वेव चेंजेस स्टडीज, या फिर ब्रीदिंग पैटर्न चेंजेस स्टडीज को हम हमारे योगा कॉन्सेप्ट में ऐड करके आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं. ओके, दैट वे इट विल हेल्प. सो ऑलवेज हमेशा जो बेसिक है, बेसिक का कॉन्सेप्ट हमेशा आपको समझ में आना चाहिए. So when you will understand the basic concept, then it will help to find you the indirect way relation also. Okay, that's why I'm more focusing why these things is needed. Then comes आपका विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा. विज्ञानमय कोशा आपको पता है, जैसे कि कोई इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब आपका जो, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, डिस्कसिंग अबाउट द नॉलेज, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के ओपिनियंस. Some people they will think कि हमें बहुत कुछ पता है. तो when you will accept I don't know anything and starts getting knowledge gradually from others, वो चीज एक होता है कि विज्ञान में कोशा में आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है. जब आपको नॉलेज मिलता है अच्छा, then that will help both your other level also to improve your lifestyle, food style, everything. Then about आपका आनंदमय कोशा, like bliss मतलब लास्ट में आप जिसके लिए सारा काम करते हैं, इनर हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए जो चीज करते हैं. तो ये जो हुआ पूरा पंचकोशा कॉन्सेप्ट में ही योगा बनाया जाता है. मतलब फिजिकल, मेंटल और जो स्पिरिचुअल बोला गया है. फिजिकल का जो डिजीज है हमारे शरीर में, अगर हाइपरटेंशन है मुझे, तो वो कहाँ पे है, मेरे अन्नमय कोशा के लेवल पे. और ट्रीटमेंट मुझे कहाँ पे देना है, बोथ अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा एंड मनमय कोशा. मतलब मेरे ब्रीदिंग के लेवल में, मेरे माइंड के लेवल में एंड मेरे बॉडी के लेवल पे. सो फिजिकल बॉडी में क्या आता है, आसनास, क्रिया, डाइट, ये ट्रीटमेंट जो है वो अन्नमय कोशा के लेवल में आता है. देन प्राणायाम कोशा में, प्राणायाम कोशा में क्या क्या आता है आपका, प्राणायाम प्रैक्टिसेस, जो भी एज पर द केस, थेरेपी केस, प्राणायाम पर सारे केसेस में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एंड डीप ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है ये तीनों. ओके, देन आपका मनमय कोशा के लेवल में, मनमय कोशा के लेवल में क्या आता है, ज्यादातर आपका रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत हेल्प करते हैं, MSRT, DRT, जिससे आपका माइंड अगर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है तो कम हो जाएगा, अगर वो स्लो है तो इट विल इंक्रीज. ओके, देन आपका विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा में भजन, कीर्तन, चैंटिंग, प्रेयर, ये सब चीजें हेल्प करते हैं. ओके, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, if anyone anytime have any doubt, every time I will change the slide, you please ask me question, or you can type in box, or after session you can ask me. Here this is the very important point, like what are the Ma'am, can you do it like full screen, because at YouTube also it is easy to see them. it is full screen only, please check. No, ma'am. No, You can click on that lower minus sign, is there, na cup type of shape. no, it is, I have put as a full screen. Wait, I can once again I'll check it. Now it is, once again wait for a while. अभी दिख रहा है, please check it. No, No, ma'am. You have to click that. Okay. that I'll do it. Okay, so another slide, next slide is about the lifestyle. In the lifestyle, what are the things we are following, like for a day-to-day activity, what are the things we are following? अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है, wait, I'll make it full screen. Now it is full screen.
If it is visible, but it is not on a slide mode. Now also You it's showing like that. you can do double click there ना. नहीं मैंने किया था अभी भी फिर भी नहीं आ रहा है. That is Wait. perfectly fine. It is visible. अभी देखो प्लीज आप लोग. अभी शेयर नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है अभी भी फुल स्क्रीन. अभी शेयर नहीं हो रहा है स्क्रीन. स्लाइड ही शेयर नहीं हो रही है अभी. वैसे मैम वो विजिबल है पूरी तरह, बट मैं YouTube पे थोड़ा जब देखते हैं तो जूम नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम You है. are in presenting, you have Okay. to click the present full screen, then it will visible. That I am doing भैया, but still why Okay, it is otherwise not it's showing okay because less data and more pictures, so it is no problem. now no current, that's why maybe. We can continue, no problem. Okay. Now I have made as a full screen, but I don't know if people are able to see or not. But okay, now I'll explain. So when you will see last, I'll revise the slide. Okay. So as I told, the mind is main important. For one person, what are the main things? First one is diet. Second is exercise. Then their habits. Habits means comes under the lifestyles. Are there? It's not about the drinks and smoke. It's about also tea and coffee. So whoever are taking tea and coffee भी चाय और कॉफी पीते हैं तो प्लीज उनको भी आपको बोलना है चाय एंड कॉफी. When you are doing your research study also, please highlight how many means if you are taking survey about diabetes or if you are doing about the GIT means gastric disorders, please keep a database or keep a point or a questionnaires about the tea coffee also, because tea coffee also triggers their digestive imbalance or acidity. Next, about the stress. Why I am forcing mentioning about the stress? Because in your yoga research you have to add the questionnaires. Okay, so when we're adding the questionnaires like mindfulness, sleeping, your sleeping timetables or pain scale, or we can say about your anxiety scale, those things are related to the stress. So when the anxiety scale is high, when the sleep quality is low, that you can relate it to stress. And in stress with yoga relation, so many studies are there, physiological way you can explain, and that way you can prove your study also. Okay, if you can't as I told you now, like we have very less number of studies in yoga field, so we can't, very less people are there. If I will do now study about COPD, like chronic respiratory disease, that is okay, in that case we can't find direct papers. So how I have to go indirect way? What is the cause of breathing problem? Like either the person will have smoking or the stress or allergy, or if anybody have diabetes, either in your digestive process, food timing, or sleeping pattern, or the person have stress, okay, lifestyle problem. Then when I'm knowing the cause, that time I can explain that physiology why this disease happening. Because with lifestyle we can explain our yoga, because we have both ancient and scientific studies on this topic. Everybody are getting how to correlate the studies if you are not finding directly studies on therapeutic case. Understanding my जी point? मैम. या जी मैम. जी. तो ये है एक फिजियोलॉजी स्ट्रेस का, जो आप लोगों को राइटिंग, कोई भी डिजीज में आप लिख रहे हो, थेरेपेटिक में, या आप कोई म्यूजिक फील्ड में लिख रहे हैं, या आप एक मेडिटेशन के ऊपर लिख रहे हैं, सो दिस कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज हेल्प. ओके, आवर इमोशनल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस के पास. तो वहां पे हाइपोथैलेमस के पास दो टाइप के नर्व होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक का काम क्या होता है? दैट विल स्टिमुलेट एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, वो सब चीजें सिंपैथेटिक में होता है. देन कम्स अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? जो काम हम
आराम से रिलैक्सली कर सकते हैं और नॉट मोर हाइपर एक्टिव। ओके, सो हमारे ये चीज हमारे पर्सनालिटी में भी इफेक्ट करता है और बॉडी सिस्टम में भी इफेक्ट करता है। जैसे हाइपरटेंशन जो है, मतलब हार्ट डिजीज जो है, उसमें बीपी बढ़ जाता है। बीपी क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है, मतलब हार्ट को लगता है मुझे ज्यादा खून चाहिए, पंप करना है। तो इसके पीछे का मैं पहले आपको पंचकोशा का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे कि अगर मुझे बीपी है एंड आई एम ए टीचर और ए डॉक्टर, तो हमारा क्या काम क्या रहता है? ज्यादा देर बात करना स्टूडेंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, या खुद का पढ़ाई करना, काम करना, सारा चीज। तो मल्टीटास्क जब होता है तो हमारे माइंड में एक टाइम में 4-5 टॉपिक चलता है। पर हम जितना खाना खाते हैं और अभी के प्रेजेंटली मेरा एनर्जी अगर 80% है मेरे पास, so what I am doing, if I have multiple thoughts at a time, I am using my 60% of energy, और एनर्जी मतलब आपका ब्लड फ्लो हुआ या ऑक्सीजन फ्लो हुआ, दैट आई एम यूजिंग डायरेक्टली बिकॉज ऑफ माई थॉट प्रोसेस। मतलब मेरा ब्रेन ले जाता है, कि ब्रेन बोलता है हार्ट को कि मुझे ज्यादा चाहिए, बिकॉज आई एम थिंकिंग, आई एम डूइंग मल्टीटास्क। तो ब्रेन हमारा 60% एनर्जी ले जाता है, तो तभी रहा रिमेनिंग ओनली 20% एनर्जी। तो हार्ट को क्या लगता है कि मुझे बाकी सिस्टम्स को देना है ना, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स। तो वही 20% में पूरा बॉडी चलाता है वो। उसके साथ लंग्स क्या करता है? when what the lungs will do, lungs बोलता है कि मेरा माइंड ऑलरेडी दूसरे जगह में है, हार्ट एनर्जी देने में बिजी है, एंड व्हेन आई एम थिंकिंग, लाइक अभी मैं बात कर रही हूँ आपके साथ और माइंड में कुछ चल रहा है, तो व्हाट हैपन, आवर concentration will not go to the breathing। हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें ध्यान हट जाता है। तो हम लोग बस 1/3 लंग्स हमारा यूज करके ब्रीदिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन भी हमारे बॉडी में उतना अच्छे से नहीं रहता। हमारा जो 3 भाग रहता है लंग्स में, हम बस 1 भाग ही यूज कर पाते हैं, रिमेनिंग 2 लेयर्स वी वॉन्ट यूज। तो क्या होता है, हम डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे और भी ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है। तो हार्ट क्या करता है, जल्दी जल्दी पंप करता है, क्योंकि हार्ट को लगता है कि मुझे ज्यादा ब्लड मिलेगा, आई हैव टू पंप फास्ट। सो हार्ट जब ज्यादा पंप करता है तो क्या होता है, तो हार्ट डैमेज हो जाता है, मसल्स रप्चर हो जाते हैं, आपका जो वॉल है वो डैमेज होता है। उसके वजह से क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है। और जब हमारा ये से स्ट्रेस कंटिन्यूअसली रहता है, 1 दिन 2 दिन में कुछ इतना इफेक्ट नहीं होता, बट दिस विल गो एज अ 6 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर्स। तो लॉन्ग प्रोसेस में क्या होता है, धीरे धीरे ये बाकी सिस्टम्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, क्योंकि हॉर्मोन्स प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाए, ब्रेन के साथ सिग्नल नहीं मिला प्रॉपरली। फिर आपका थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज। तो मेन कॉज जो है हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस, माइंड अवेयरनेस, ओके, और ब्लड फ्लो। ये तीनों ही मेन कारण है सारे डिजीज का। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि जब आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द थेरेपी, और जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं और डिस्कशन लिखते हैं आपके रिजल्ट का, तो आप ये सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं आपके कोई भी थेरेपेटिकल स्टडीज के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। सो दैट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू प्रूव योर स्टडी। ओके, क्योंकि आजकल सारे स्टडीज वी हैव टू एक्सप्लेन ऑन द साइंटिफिक वे। सो आपको इनडायरेक्ट वे से रिलेट करके डायरेक्टली आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है, व्हाई यू वांट टू डू दिस स्टडी, उसके साथ ये मैच कर जाता है। ओके, so you can see this slide, IAYT। IAYT का फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? Integrated approach to yoga therapy. यस, सो इंटीग्रेटेड अप्रोच टू योगा थेरेपी में सारा आपका जितने सारे डिजीज है, ओके, वो सारे चीजें आती हैं। तो जितना आपका डिजीज हुआ, जैसे कि सारा सिस्टम वाइज आपका जो जितने सारे 9 सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स वाइज आता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, जॉइंट्स एंड बोन का आया, मेंटल डिसऑर्डर्स आया, मसल्स का आया, फिर आपका GIT का
obesity, diabetes, hypertension. Pregnancy is not a disease, pregnancy is a stage. Okay, so here also you हम लोग IOYT use करते हैं. Okay, and respiratory disease like asthma. So here integrated approach of yoga therapy का main motto क्या है? पंचकोशा concept. मतलब आदि जो व्याधि जो concept है पंचकोशा का, वो हम merge करके जो मॉड्यूल बनाते हैं इसी बेसिस बनाते हैं सारे डिजीज के लिए. ओके, सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट हो रहा है? प्लीज क्वेश्चन पूछिए अगर डाउट है तो. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको योगा थेरेपी का? जी मैम. क्योंकि हम अभी जो रिसर्च के बारे में जाएंगे पर्टिकुलरली रिसर्च के ऊपर, तो उस टाइम में फिर से थेरेपी पढ़ाना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो प्लीज पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो. ओके, जैसे कि आप इस पीपीटी में देख सकते हैं, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन. इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? Treatment. Yeah, experience group. We are providing what intervention या treatment that. जो भी हमारा जो स्टडी है, हम उसमें क्या देते हैं, उस स्टडीज में क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या क्या आप जो थेरेपी है या जो चीज आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इंटरवेंशन. कोई योगा के ऊपर कर रहा है, कोई मेडिसिन के ऊपर करते हैं, सम ऑफ आर डूइंग ऑन सर्जरी, और सम ऑफ आर डूइंग ऑन कलर थेरेपी, और आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट का जो व्हाट इज हैपन व्हेन वी विल गिव दिस ट्रीटमेंट टू वन पर्सन, दोस थिंग्स कम अंडर द इंटरवेंशन. ओके, असेसमेंट्स मतलब क्या है? जो हम जब इंटरवेंशन देते हैं उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं, या उसका क्या चेंज हो रहा है उसके बाद, उसको मेजरमेंट करने के लिए वी यूजेस असेसमेंट्स. असेसमेंट मीन्स आपका जैसे कि बॉडी वेट, ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी के बाद आपका वेट रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैम आपकी आवाज. अभी आ रही है मेरी आवाज? सॉरी. यस मैम, यस मैम. ओके, ओके. सो असेसमेंट समझ में आया सबको? असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो मेजरमेंट चीज है उसको असेसमेंट बोलते हैं. जैसे कि ब्लड प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन आप मेजर कर रहे हैं, या फिर आपका बॉडी का वेट मेजर कर रहे हैं, वो सब चीजें क्या क्या असेसमेंट आपके स्टडीज में. अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं अभी, अगर मेरा एक पीएचडी का सिनॉप्सिस है, अगर आई डिजीज या रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो इंटरवेंशन मेरा है योगा थेरेपी फॉर 6 मंथ. तो मैं असेसमेंट क्या लूंगी आस्थमा के लिए या सीओपीडी के लिए? एक तो ये कहाँ पे होता है वो पहले सोचना है. कहाँ पे होता है? ये लंग्स में होता है. तो लंग्स के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे? पीएफटी उसको बोलते हैं. हाँ, स्पायरोमेट्री. और उसका एडवांस क्या है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे. तो स्पायरोमेट्री का एक छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट भी है और एक थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है. तो दिस कम्स डिपेंड्स ऑन आपका फंड. अगर आपके पास पैसे हैं या कोई स्पॉन्सर है. अगर कोई स्पॉन्सर नहीं है तो जो बेसिक चीजें हैं जो आपको बिना पैसे खर्च करके मिल जाएगा, जैसे कि पल्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन, और उनका सिम्टम स्कोर, क्वेश्चनियर्स, इसमें पैसे ज्यादा खर्च करने हम we no need to expand means you no need to spend more money. तो उसकी वजह से क्या होता है,
आपका स्टडी तो हो जाता है बट इट इज नॉट मोर गुड क्वालिटी. ओके, क्वालिटी उसका ज्यादा अच्छा नहीं होता. सो ऑलवेज असेसमेंट इट शुड बी ऑन गुड क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स जैसे कि ज्यादा डायग्नोसिस टूल के लिए जो यूज करते हैं, जैसे कि एमआरआई स्कैन हुआ, ईसीजी, इको, ये सारा क्या होता है, थोड़ा एडवांस होता है एंड दैट इज लिटिल कॉस्टली ऑल्सो, जो एक्सपेंसिव है. बट इफ यू कैन अरेंज फंड फॉर योर स्टडी, ओके, दैट इज मोर हेल्पफुल. जब भी आपको कोई भी फंड मिल जाता है आपके स्टडी, वो रहता है. ओके, नेक्स्ट कम्स अबाउट द, हाँ यहाँ पे क्या है कि ऑलवेज, और एक इम्पोर्टेंट चीज है, इंटरवेंशन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए. बिकॉज वी सी ऑल स्टडीज लाइक इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ योगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ योगा. मोर देन दैट, अगर आपको अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है और हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करना है, तो क्या होता है, ट्राई टू डू मोर लॉन्ग टर्म स्टडीज. लॉन्ग टर्म मतलब जिसका ड्यूरेशन योगा प्रैक्टिस का ज्यादा दिन हो, 6 महीने, 1 साल, वो सब ज्यादा अच्छा स्टडीज माना जाता है. विद दैट, Ma'am, one yes, question I want to ask. The 3 month intervention is a long term or short? that also long term, but nowadays so many studies are going on 6 months, 3 months. 3 months maybe you have to see like how many days you are giving in a week. Daily you are giving, or weekly twice, or you are giving, or weekly 3 days you are giving. That day, number of the days matters. Okay. Then comes about the assessment. अगर if you are doing the short studies also, short term study also, but आपका assessment ज्यादा अच्छा होना चाहिए. जैसे कि मैं बोली, जो ज्यादा डायग्नोस्टिक पर्पस वाले में ज्यादा यूज करते हैं, क्लिनिकली जो ज्यादा यूज होता है असेसमेंट, इट्स नॉट अबाउट द पेशेंट कि हम बस ये जो स्पायरोमेट्री है या आंखों का जो टेस्ट होता है, ऑप्थेल्मिक टेस्ट होता है, वो बस हम पेशेंट के ऊपर करेंगे. वी कैन डू फॉर द नॉर्मल ऑल्सो, लाइक आफ्टर क्रिया and before kriya practice, immediately effect of kriya we want to see. जैसे कि हमें पता है क्रिया करने के बाद हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होता है, ब्रीदिंग ओपन, ब्रीदिंग अप, जो ब्रीदिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होता है. तो इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, we can measure from the PFT और spirometry. तो spirometry जो छोटा वाला होता है, like you have to exhale only, वो आपको 900 रुपए में, 1000 रुपए में मिल जाएगा. और जो क्लिनिकली यूज होता है स्टैंडर्ड पीएफटी मशीन जो है, वो आपको मिनिमम 60 to 70,000 हो जाता है, जो कि वो हॉस्पिटल में रहता है खाली. एंड इफ योर प्रोजेक्ट इज फंडिंग बाय समवन, तो ये चीज क्या होता है, यू कैन परचेज और यू कैन गेट फ्रॉम द, यू कैन टेक एज ए रेंट वाइज. जैसे कि आप किसी को 1 महीने के लिए रेंट चलाते हैं, वो सब चीजें भी रहता है. सो व्हेन यू आर प्लानिंग द स्टडी, मेक श्योर योर इंटरवेंशन एंड असेसमेंट, ये दोनों आपका क्लियर होना चाहिए. इसको बार बार आप चेंज नहीं करोगे. अगर आप बार बार चेंज करते हो, क्या होता है, बहुत सारा चीजें इफेक्ट होता है. आपका फंड, आपका क्वालिटी ऑफ स्टडी, आपका सैंपल साइज, सब कुछ चेंज हो जाता है. तो जब भी आप स्टडी करते हो, ऐसा नहीं कि आज मन में आया हम डायबिटीज के ऊपर करते हैं, हम बच्चों के ऊपर करते हैं, या वी विल सी हाउ द, if we'll see how the mental activity is going on. पर कितना दिन देना है, क्या क्या देखना है, एंड व्हाट यू वांट टू नो अबाउट द इफेक्ट, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसलिए हमेशा पहले वो ये 3-4 पॉइंट्स पहले फिक्स कीजिए. उसके बाद कहाँ से लेना है पेशेंट्स, अगर आपका सोर्सेस ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट. ओके, सोर्सेस मीन्स आप कहाँ से वो पेशेंट लेंगे. इफ यू आर वर्किंग लाइक वैसा, तो आपको स्टूडेंट्स बहुत मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, तो स्टूडेंट फील्ड आपके पास है. सो यू हैव टू नाउ, ड्यूरेशन भी आपको अच्छा मिल जाएगा, बट मेन यू हैव टू फोकस हियर अबाउट असेसमेंट. बट इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो, और आप PhD कर रहे हो, एंड यू वांट टू सी एनी क्रिटिकल केसेस लाइक कैंसर हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, सो देयर्स कम्स, आपको क्या करना है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर, ये सब हमें हॉस्पिटल्स में ही मिलते हैं केसेस. सो यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल्स, टॉक टू द पेशेंट, टॉक टू द मैनेजमेंट,
कैलकुलेट करना है आपको सैंपल साइज एग्जैक्ट कितना चाहिए। अगर आपको 30 चाहिए तो आपको मिनिमम 50 सैंपल लेना है, सो दैट योर स्टडी विल गो प्रॉपरली। अगर कोई भी बीच में माइनस हो जाता है, कोई भी स्टडी से चला जाता है, दैट विल हेल्प टू बैलेंस योर एन साइज। ओके, एंड हियर कम्स अबाउट द असेसमेंट। यहाँ पे जैसे कि आप कम सैंपल ले रहे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे कैंसर हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह हुआ, इसमें अगर आप 10 पेशेंट भी लेते हैं, बट बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लाइक सीओपीडी एक तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, आईएलडी या कॉलन कैंसर, ये सब चीजें क्या होता है, बहुत कम लोगों को होता है और बहुत रेयर केसेस में होता है। जैसे कि डायबिटीज इज कॉमन, हाइपरटेंशन इज कॉमन इन इंडिया, बट दिस केस आर वेरी रेयर केस। तो यहाँ पे आप 10 पेशेंट ले सकते हैं, बट हियर असेसमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इंटरवेंशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, दैट्स व्हाई मैं क्यों ये बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि थेरेपेटिकल केसेस में दिस विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल आस्क डायरेक्टली, दे विल सी फर्स्ट आपका इंटरवेंशन क्या है और असेसमेंट कितना क्या है। ओके, सो ऑलवेज वाई एम एक्सप्लेनिंग द फिजियोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी का हेल्प चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको कैंसर में देखना है कितना सेल ग्रोथ हो रहा है, या यू हैव टू सी इन आईएलडी कितना आपका लंग्स एक्सपैंड हो रहा है, कम हो रहा है, तो पहले आपको उस डिजीज का, पहले आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट चीज वो डिजीज के बारे में पढ़ना है, वो डिजीज में क्या होता है। या फिर लेट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट डिजीज, कोई भी अगर आप शीर्षासना ले रहे हैं तो इसमें जो आपके शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, हाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन, और कितना अमाउंट का जा रहा है या कितना ड्यूरेशन में ये स्पीड हो जाता है, और व्हाट इज द इफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर द शीर्षासना। तो पहले शीर्षासना का फिजियोलॉजी जानना है, बॉडी का ब्लड, ब्रेन में क्या फंक्शन होता है, ब्लड जाता है तो ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में जानना है। फर्स्ट यू हैव टू नो द डिजीज फिजियोलॉजी, सेकेंड जब डिजीज फिजियोलॉजी जान जाते हैं दैट विल हेल्प फॉर द असेसमेंट्स। ओके, देन आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आईओएल बोलते हैं एक, आंखों का जो जो लोग स्पेक्स पहनते हैं उनका जो क्या बोलते हैं उसको, आप मायोपिया, जो मायोपिया में क्या होता है, आंखों में हम दूर का जो चीज है वी कांट सी, इवन समटाइम नियर आल्सो वी कांट सी, मिक्स हो जाता है कभी किसी किसी को, बट जनरली दे कांट सी द फार थिंग्स। देन इसमें क्या होता है, जो लाइट होता है बाहर का रिफ्लेक्शन, तो वो कम गलत जगह में पड़ता है, रेटिना के ऊपर नहीं आता, दूसरी जगह में चला जाता है। तो वो जो लेंथ होता है एक स्केल का, उसको बोलते हैं आईओएल। तो आईओएल का स्केल जो है वो आपका 12 महीने के बाद चेंज होता है। मतलब अभी आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, आई ड्रॉप ले रहे हैं, तो 12 मंथ्स लगता है उसको चेंज होने में। तो हमारा योगा इंटरवेंशन मिनिमम 12 मंथ्स होना चाहिए। उसी तरह ब्लड में जो अगर चेंजेस देखना है आपको, हीमोग्लोबिन का या HbA1c का देखना है, शुगर लेवल का, तो उसमें 3 मंथ्स मिनिमम आपको इंटरवेंशन देना है। तो असेसमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये असेसमेंट अगर हम देख रहे हैं ये कितना जल्दी हो सकता है चेंजेस। जैसे कि ईसीजी है, ईसीजी एवरीडे यू कैन डू उसका, क्योंकि हार्ट के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड है और ये एवरी 1 आवर 2 आवर्स फ्यू सेकेंड्स में चेंज होता रहता है। सो यू कैन डू ईसीजी इमीडिएट आफ्टर ऑफ योगा एंड बिफोर योगा ऑल्सो। तो जो भी आप असेसमेंट देखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, so we should take like different, like many measuring variables. yes. Then it will be, ma'am, not considered as a specific, like we say, na, that specific disease or specific problem we should have specific variable. हाँ, मैं अभी बताती हूँ वो चीज। अब क्वेश्चन जो है, अब अभी ये पीपीटी देख पा रहे हैं सब लोग? Yes, ma'am. जी हाँ, अभी भी ये अभी भी ये मेरा फुल स्क्रीन नहीं है क्या? अभी फुल स्क्रीन है। अभी फुल स्क्रीन दिख रहा है? ओके। नो मैम, अभी फुल स्क्रीन नहीं है। मैम फुल स्क्रीन नहीं है, पर नहीं। ओके, सॉरी फॉर दैट। आप लैपटॉप से प्रेजेंट कर रहे हैं मैम? हाँ, यस यस। हाँ, तो नीचे फंक्शन की को प्रेस करके ऊपर F5 को प्रेस करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगी। नहीं वो FN किया करके है मैंने फिर किया भी नहीं है, हो रहा है, तो फिर मतलब भी वो नहीं की हो में रहा है। कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है। जी। ओके, पर आपको साइड से थोड़ा बहुत दिख रहा है पीपीटी?
मैम Yes, ma'am. विजिबल Yes, है, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। ओके ओके, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, कोई भी डाउट होगा तो। ओके, एनीवे आई विल शेयर द पीपीटी, नो प्रॉब्लम। तो जो क्राइटेरिया है असेसमेंट्स का, अभी फॉर द एडवांस स्टडीज और इफ यू वांट, अभी जो जर्नल्स का क्राइटेरिया धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, वो है कि फर्स्ट इज बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? Laboratory test, mainly blood test or something like. जी, लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब आप जो ब्लड टेस्ट करते हैं, एक भी अगर आपके पास आपके स्टडी में इफ यू आर एडिंग ए ब्लड टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपके स्टडी के लिए कोई भी ऐसा बायोमार्कर्स नहीं है, दैट इज डिफरेंट, बट इफ यू कैन, इफ यू हैव ऑन योर डिजीज के, जैसे कि डायबिटीज में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, ब्रेन फंक्शन के लिए है, बट कुछ कुछ केसेस में सम ऑफ नो बायोमार्कर्स आर देयर, बट यू इफ यू हैव एंड यू आर एबल टू, यू आर गेटिंग द फंड, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है। एक पेशेंट का ही आपका 2000 मिनिमम खर्चा हो जाता है अगर आप छोटा टेस्ट भी करते हैं। सो फंड बहुत मैटर करता है स्टडी प्लान करने के लिए। सो ऑलवेज व्हेन यू आर प्लानिंग योर स्टडी, ट्राई टू फोकस ऑन बजट आल्सो। ओके, कि Ma'am, आपका, CTRI is also a major problem in biomarker. सॉरी, CTRI, Yes, ma'am. yes, yes. So that's why when you are doing any approval from IEC, CTRI, clinical clearance लगते हैं, तो ये जो चीज है ना, जो हम मैनुअली कुछ चेंज नहीं कर सकते। Like if you are giving questionnaires to me, I can manually change as per my convenient, और after taking from me you can change, कि आप वो क्वेश्चन लेने के बाद आप भी उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? लेकिन जैसे कि बायोमार्कर्स हुआ, जो ब्लड टेस्ट हुआ, दैट इज फ्रॉम माय बॉडी यू आर टेकिंग एंड डूइंग द लैब टेस्ट, सो दोस थिंग्स आर मोर ऑथेंटिक और मोर वैलिड होता है, राइट? जो मैनुअली हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, गुड। मैम मेंटल जो साइकोलॉजिकल होते हैं डिसऑर्डर्स, उनमें भी बायोमार्कर मार्कर यूज किए जा सकते हैं क्या? हाँ, किए जा सकते हैं। आपका एक स्पेशल क्लास रहेगा, राहुल भैया और एक क्लास कंडक्ट करेंगे बायोमार्कर्स के ऊपर। ओके, और ये चीजें अगर आपके पास अवेलेबल है फंड और यू कैन गो थ्रू, जैसे कि आपका टॉपिक के ऊपर डिपेंड है, जैसे मैं बोली टॉपिक के ऊपर डिपेंड है कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, पर इट इज मोर हेल्पफुल इफ यू टेक बायोमार्कर्स। ओके, नेक्स्ट अबाउट द ऑटोनोमिक एक्टिविटी। ऑटोनोमिक एक्टिविटी मतलब आपका जो ब्रेन फंक्शन है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कैसा चल रहा है, कोई बता सकता है? हम ऑटोनोमिक फंक्शन कैसे चेक करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ईसीजी। ईसीजी हम कार्डियक फंक्शन ज्यादा चेक करते हैं। एचआरवी, FNRI. एफएनआरआई एंड एचआरवी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ओके, इससे आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी पता चलता है। सो जितना आपका इंस्ट्रूमेंट जितना ऑथेंटिक होगा, उतना आपका असेसमेंट स्ट्रांग होता है और स्टडी और ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, सो ऑलवेज असेसमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप अच्छा स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी लेवल में या एमएससी लेवल में करना चाहते हैं, सिंपली बस आपका डिजिटेशन कंप्लीट करने के लिए, you can do, but if you want to do for your study purpose or for publish purpose, you have to do this way. Okay, then comes the physiological active। physiological मतलब जो आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, how it is changing, like the you can say blood pressure, PFT और आई टेस्ट जैसे मैं बोली, और कोई भी जो जनरल मेजरमेंट चीजें हैं इंस्ट्रूमेंट यूज करके, उसको वो बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट क्राइटेरिया। देन क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स का मतलब जो भी आप क्वेश्चनियर्स देते हैं आपके पेशेंट्स को या आपके पार्टिसिपेंट्स को या आपके सब्जेक्ट्स को, वो क्वेश्चनियर्स एक सेट, जनरली स्ट्रेस क्वेश्चनियर जैसे मैं प्रीवियस में बोली, लाइफस्टाइल स्ट्रेस क्वेश्चनियर, एंग्जाइटी, स्लीप, दोस क्वेश्चन और माइंडफुलनेस, ये सब चीजें क्वेश्चनियर्स भी आपको ऐड करना जरूरी है। ओके, सो मोस्टली बायोमार्कर्स, ऑटोनोमिक फंक्शन, फिजियोलॉजिकल एंड योर क्वेश्चनियर्स, दिस 4 क्राइटेरिया आपके असेसमेंट में होना चाहिए।
एक या दो, और मेन फोकस हमेशा आपके टॉपिक के साइड। जैसे कि साक्षी जी ने पूछा कि ज्यादा असेसमेंट हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगा या टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑलवेज लाइक HRV लिया हमने, हार्ट डिजीज में क्या रिलेशन है, जैसे कि मैं आपको अभी स्ट्रेस एक्सप्लेन की, हार्ट पंपिंग एक्सप्लेन की। जब हम सिंपैथेटिक इंक्रीज हुआ तो हार्ट में क्या चेंजेस आ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट हुआ तो हार्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, माइंड में क्या चेंज आ रहा है, मेंटल लेवल में क्या चेंजेस आ रहा है, मेंटल डिजीज में, रेस्पिरेटरी केसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो बिकॉज वी नो दैट आवर ऑल सिस्टम इज रिलेटेड टू ईच अदर, हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, मसल्स, ब्लड फ्लो, सारा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, राइट। पर आपका मेन टारगेट होना चाहिए आपका टॉपिक प्रूव करने में। तो इनडायरेक्टली जितने सारे असेसमेंट है वो आपके टॉपिक के रिलेटेड या टॉपिक को प्रूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आस्थमा है पर आप BP चेक करेंगे, तो रिलेशन थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा ज्यादा नियर बाई लेना पड़ेगा, जैसे कि HRV इट इज हेल्पफुल हियर। मैम म्यूट हो गए हैं आप। हाँ मैंने किया, एक्चुअली साइड में गाड़ी जा रहा था इसलिए। सो असेसमेंट यू कैन सी, ये सारे इंपॉर्टेंट हाईली इफेक्टिव असेसमेंट है, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम वाइज। और भी बहुत सारे सिस्टम मैंने लिया नहीं है, जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स है थोड़ा बहुत वो चीज आप देख सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। दैट वी कैन गो लेटर, नेक्स्ट जाएंगे। तो नेक्स्ट कम आता है आपका योगा मॉड्यूल। अभी तक सबको समझ में आ गया असेसमेंट, इंटरवेंशन, योगा थेरेपी? Yes, ma'am. तो अभी हम मेथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। योगा मॉड्यूल जो वैलिड होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि ये चीज पहले आपको क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू। हमेशा आपका लिटरेचर रिव्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी स्टडी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर PhD लेवल, कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं ना, that will help you throughout your life. So you should be thorough about that topic. Either it is modern studies or any Ayurvedic concept or naturopathy concept or yoga concept also doesn't matter. It should be related to your study, and you should know how many studies are there or how the studies are affecting to your or relating to your studies. Okay, so literature review, how much you can do or how much you can give time for literature review, that will help you to more strongly when you will talk to somebody, like when you are presenting uh, to someone your studies, like synopsis presentation, this is everything, that will give a strong point, or it will help you to give a strong point, because you have read you have gone through the all concept of your disease area or all concept of your intervention area. Okay, so literature review always do thoroughly, like ऐसा नहीं है कि 10-15 पेपर पढ़ लिया तो हो गया अपना स्टडी। इट्स नॉट लाइक दैट। You should have minimum, if you are on PhD level, at least minimum 300 to 400 papers you have to read. Okay, on, it's not only the yoga paper, it's about all topic. Okay, all way of therapy. Then आपका जो लिटरेचर रिव्यू होने के बाद what you will find, like example is any disease आपने लिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ योगा कैसे हेल्प करता है, आपने कुछ रिव्यू पेपर्स देखा, RCT पेपर्स देखा, सिंगल केस स्टडीज देखा, पायलट स्टडीज देखा, और समटाइम यू डोंट हैव एनी स्टडी, सो गो टू द रिव्यू स्टडीज। और इनडायरेक्ट वे में जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस विथ मॉडर्न डिजीज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट है, तो आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है, फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, देयर यू कैन ड्रैग रिलेट टू द योगा कॉन्सेप्ट। और जो मॉडर्न साइंस का फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट है उसको आप योगा कॉन्सेप्ट में रिलेट करके आप आपका, जैसे कि एग्जाम्पल, एक मेडिसिन, इफ आई एम टेकिंग एनी मेडिसिन, दैट मेडिसिन इज हेल्पिंग मी टू रिड्यूस माई ब्लड प्रेशर। और तो फिजियोलॉजी क्या है, इट इज ए एंड यू कैन से
सोडियम ब्लॉकर, मतलब सॉल्ट कम कर देता है हमारे बॉडी में। तो हम योगा भी इसको रिलेट करेंगे। सॉल्ट कब कम होता है? जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, देन कम्स द योगा। आप रिलेट करके उसको भी, then you can see this, say that these are the asana which help for the improving the blood flow, improve balancing, expanding the chest, strengthening the chest muscles, or helping to improve the breathing process। उस वे में अगर आपके पास कुछ डायरेक्ट पेपर्स नहीं है थेरेपेटिक में, तो आप उस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इफ यू हैव द डायरेक्ट पेपर्स, सम few at least minimum 4 or 5 papers minimum, then you can go direct to the development of yoga module. So by the seeing the previous studies, how the studies are there, those things so those things you can check it how those papers are showing the module, or how they will, some studies they are not showing directly the practices, only they will say yoga therapy for this many days or pranayama for this many days. There you have to take help from the ancient book. Okay, ancient book में क्या आता है आपका? ancient book में क्या क्या आता है बता सकते हैं सब लोग? आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। फर्स्ट आपका जो हठ योगा बुक, सारे हठ योगा प्रतिपिका, गिरिंद्र संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, ओके, और गोरक्ष संहिता ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। हठ योगा प्रतिपिका एंड गिरिंद्र संहिता, ये दोनों में बहुत ज्यादातर प्रैक्टिसेस दिया गया है। सो ये जो प्रैक्टिसेस है, सॉरी ये जो बुक्स है, इनमें से दिस टू इज मोर इम्पोर्टेंट। other books are also is there, but these two mostly हठ योगा प्रतिपिका एंड हठ रत्नावली, ये दोनों बुक में से आपको ज्यादा कंटेंट मिलते हैं फॉर द योगा थेरेपी। ओके, because they explain more about the asanas, more about the physiology part, or next comes about the pranayama also they explain properly. So every time whenever you are writing any module or writing the review, you have to go through the all Hatha Yoga books. And if you can go the Upanishad also, that will be well good for literature review. But for module, yoga module, you need mostly Hatha Yoga Pratipika. Then Girendra Samhita. These two books are very important for your yoga module preparation. Okay. Excuse me, ma'am. If some of the papers are not giving their intervention, like not they're exploring their intervention, then how we consider that it is matching with our intervention or not? Sorry, I didn't get your question. If some of the papers are not mentioning, or they are not like exploring their asana practices or whatever the intervention they are giving exactly, just they say that we did this protocol like you were saying. So how will match that our intervention is matching with them? So there comes the role of you can write, you can add them as a literature review. Like they will mention we have done the asanas, pranayama for 2 months and we find this improvement, but they won't mention with the asanas. So what you can do, go their reference. Okay. Always, if you can't find, if you are seeing that this topic is related to my study and you are not finding the content properly, again go to that paper reference also. So that paper reference also gives so many other points to you. First. Second, if you are not finding with that also, then focus on mostly to the ancient part, means our books. Whatever the books are available, you can take their reference also. Next, you find another papers which will be helping you more on your field, like other study, who will be proving like some studies directly is not saying Kapalbhati is helpful, but they will be having the mix set of pranayama. They will be writing Kapalbhati, Brahmari, Nadisuddhi is helpful for this practice. So we can consider that study also to this. Very few studies are there only specifically to one asanas. So you can take that group of practice for a literature review, consider as this practice also mentioned in this study,
and you take more support of your initial book and go for the individual asana practice. Like कोई भी अगर आप एक आसना लेके प्रैक्टिस करेगा, सूर्य नमस्कार को लेके करेगा, या फिर गर्भासना को लेके करेगा, गोमुख आसना को करेगा, तो इंडिविजुअल स्टडीज वी डोंट हैव, राइट? बट कुछ कुछ योगा मॉड्यूल में और प्रीवियस स्टडीज में यू कैन नो दिस, कोई भी अगर डाइजेस्टिव डिजीज है, वी हैव गिवन दिस सेट ऑफ आसना, धनुरासना, भुजंगासना, गोमुखासना. तो वो सेट में अगर your गोमुखासना नेम इज देयर, यू कैन ऐड दैट इन योर लिटरेचर रिव्यू. Okay, if it is not there, then go through most towards the initial book. So here, got my point, everyone? Next, Yes, ma'am. about yoga module. Yoga module में क्या होना चाहिए? As I told, first references your books, then the module pattern. IOYT concept में होना चाहिए हमेशा. So always it should be on first loosening breathing, then the sequences, you know, asana, pranayama, kriya, mudras, bandhas, relaxation technique, and counseling, like the IOYT Panchakosha concept. Okay, those things, that way you have to prepare the module. And when we are preparing the module, there you have to concentrate. Example, I will show you at last. Okay, or else I'll show you now. 1 minute. One here. Yes, please ask question. Everyone can see this. Yes, ma'am. So no need to focus on the practices. This I'm showing you how it looks like or how we should do. Yes, Rajesh जी, question आपको क्या पूछना है, पूछ सकते हैं. Okay, you can see here. First, I have added, as you can see, the breathing practices. Okay. So how, when we are preparing a yoga module, अब diabetes के लिए है, और hypertension, or cancer, or multiple sclerosis, always it should cover as a table form, and the list of practice should convert as like this way. This is the one practice for the myopia. Okay, eye diseases. So how we have prepared? First, you have to go through mostly loosening and breathing practices is very helpful for eye disease, heart, like cardio systems and respiratory system. Okay, so these three, or back pain, you can say, these 3 or 4 case, they can't do more dynamic practices. For them, we need to give first slow practices. Then we have to give only few asanas. So you have to know the therapy disease also, how it affects, or which asana they can do. First, you have to go through the clinical way. So always when we are preparing the module, first for a sample, visit to the hospitals, or if you're doing on healthy individuals, see how they're able to perform or not the practice. Because as I told, go through the books, initial book, but sometimes books will give like Dhanurasana is helpful for chest expanding, but practically when the person, this is very important, okay, for yoga module, please listen properly, carefully. So Dhanurasana is very helpful for chest expanding, right? But practically or clinically, when we are giving to a patient, like those who have asthma, that time they will face difficulty to practice Dhanurasana. So many 10 asanas will be there, good for chest expanding in books, but from the 10, you write those 10, you keep in another folder those 10, but from the 10, 2 or 3 the patients will be able to do only 2 or 3. Okay, that's why we are preparing the module. We know that how many asanas is helpful for chest expanding, but practically for that case, specifically that case, depends on the severity, depends on the major patients, how they are able to do the yoga. That way we are removing the asanas, that way we are modifying the asanas. Okay, so whenever people will ask, please add the Dhanurasana, why you didn't add the Dhanurasana, there you can explain,
Like we know that this is helpful, but patient can't do because that will give more exertion, like more strain over the hand, leg. They have to lie down and do the practice in prone position. For practically, that will give more condition for them. The symptoms will increase first. So what you can say, first we have to give them this module, let them improve. After improving or reducing the symptoms, later stage we can give them those practices. Like that way you have to give the answer when anybody is asking. So as we can see, first you have to add the loosening and breathing practices. Then asanas is here, very few asanas are there. So I didn't add is sitting, supine or prone. If you have more set of asana, like for obesity, and one more thing, if you're adding one disease with comorbidity, like obesity with diabetes, or obesity with hypertension, obesity with asthma, like that's it. If you are preparing, you have to see both angles. It's not only obesity means you have to reduce weight, but you will not focus about hypertension. So first you have to see as per the severity, because hypertension is more severe than obesity, but both are related. Because of hypertension obesity is happening, or because of obesity your hypertension is happening. So first, which one the severe disease? It here is hypertension is severe, so you have to reduce the hypertension severity. Then when your BP will go, थोड़ा BP आपका कम हो जाने के बाद, gradually you do asanas more. But as you know, how you can say, like how if the patient person will ask, that means obesity practice we are not giving asanas. Here you can give answer कि obesity का कारण जो पंचकोशा के concept में है, it's not only the physical level, right? It's for mind level also and prana level also. So there I'm treating them as a prana level, mind level and diet. So मैं ये तीनों चीज के ऊपर अभी फोकस कर रहा हूँ. Gradually when the BP will go down by these practices, we'll give them more dynamic practices. Okay. So always module ऐसा practically बनना चाहिए. It's not about the theoretical. Then आपका क्या होता है, ये आपने देख लिया, ये इस टाइप का दिखना चाहिए आपका मॉड्यूल. प्राणायामा, क्रिया, मुद्रास, रिलैक्स टेक्निक एंड लास्ट में काउंसलिंग. बिकॉज हम IAYT कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं, पंचकोशा कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक लाइक दिस वे. एवरीबॉडी क्लियर? जी मैम. You need to mention the timing. Sorry sir. You need to mention the timing. Or how much duration they should talk like that. Duration that you have to mention later. Because Okay. आपका जो first you have to finalize the practice, then you have to go to the duration of the practice. Okay. Duration, because generally when we are giving yoga to any person, generally we give maximum 45 minutes to 1 hour. So we make a model for 1 hour basis. So there you can, when we are finalizing the practice and giving to the patient, that time you can mention the rounds and duration of the practices. Okay. Then comes about the yes please. अगर कोई वेरिएबल है, लाइक एक वेरिएबल हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया योगा, और दूसरा हो गया हमारा कोई भी साइकोलॉजी का वेरिएबल. तो जो इंडिपेंडेबल वेरिएबल है जिसका हमको इंटरवेंशन देना है, तो वो इंटरवेंशन बिना मॉड्यूल दिए, लाइक अगर मुझे कोई योगा की क्लास है और वो क्लास को लेना है, तो क्या वो एज अ मॉड्यूल ले सकते हैं? उसको हाँ, भी जी. पूरा ब्रीफ करना होगा क्या? नहीं ऐसे मॉड्यूल ही ले सकते हैं, बट उसका भी आपको साइंटिफिक प्रूफ देना पड़ेगा कि कैसे चेंजेस हो रहा है, रिलेशन क्या है. जैसे कि जो भी हमने यहाँ पे जो मॉड्यूल दिया है आपको, मैंने दिखाया, वो सारे आसनास का फिजियोलॉजी और लिटरेचर रिव्यू में मुझे उसको शो करना है, so that you can use for a research base when you have to prove that कि आपने ये आसना क्यों लिया है. So that when I am writing the literature review, or when I am writing the scientific study things or introduction area or yoga and my disease, that time I have to explain the importance points from the module.
अगर मैं ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिस 45 मिनट की रेगुलर जो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चलता है प्रेशर, उसको मैं एज ए इंटरवेंशन ले सकता हूँ इसकी दैट जगह? वन यू आर सेइंग एज ए योगा प्रैक्टिस, जो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट योगा ट्रेडिशनल योगा थेरेपी. प्रैक्टिस. हाँ, दैट वी से एज ए योगा प्रैक्टिस, नॉट योगा थेरेपी. ओके. थेरेपी विल कम एज ए डिजीज केस. और ओके. कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जिसमें किसी पर्सन को हम थेरेपेटिकली चेंजेस क्या हो रहा है, उनके माइंड में चेंजेस क्या हो रहा है, उनके बॉडी में फिजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, दैट टाइम वी सेज दैट इज थेरेपेटिकल. एंड ओनली इफ आई गिविंग, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स का क्लास चल रहा है योगा आसनास, दैट वी सेज ओनली योगा प्रैक्टिस, because we are adding all the practices, but we are not seeing any effects. Only daily basis we are doing. But that same practice, when you are converting as a module, then that will consider as a therapy, or that will as a consider as a yoga module for this case. Like if you are seeing for students mindfulness, you are giving this yoga module जो आप ऑलरेडी देखते आ रहे हैं 2 साल से, पर अभी आपको उसके ऊपर स्टडी करना है, सो दैट यू कैन गिव द ऑल प्रूफ ऑफ योर स्टडीज. लाइक जैसे कि आपने बोला एनिशियंट, सो यू हैव टू गिव द रिव्यू ऑफ एनिशियंट बुक्स, रिव्यू ऑफ योर साइंटिफिक स्टडीज, देन दैट विल कन्वर्ट एज ए मॉड्यूल. ओके, मॉड्यूल क्योंकि हमें पता है, जैसे मैं बोली, मुझे पता है धनुरासना इज गुड फॉर चेस्ट एक्सपैंडिंग और मसल स्ट्रेंथ, बट धनुरासना प्रैक्टिकली इट इज नॉट गुड फॉर अस्थमा. तो वहां पे मॉड्यूल का रोल है. ओके, वहां पे मॉड्यूल का रोल क्या है कि व्हेन मॉड्यूल फर्स्ट विल डू एज ए पायलट स्टडी. 1 मिनट आई विल शो दैट क्विकली. मॉड्यूल क्या होता है, जो वैलिडेशन और फिजिबिलिटी होता है ना. वैलिडेशन मतलब आपने मॉड्यूल बना दिया आपके हिसाब से, देन इट विल गो टू वैलिडेशन. वैलिडेशन जो करते हैं जो लोग, दे शुड हैव मिनिमम 5 years above experience on that field. जैसे कि चाहे वो आपका योगा में आसना हो, प्राणायाम में हो, कोई भी आप सेट बना रहे हैं, those thing total set should be approved by the experienced person. ऐसा नहीं आप डायरेक्टली मॉड्यूल बनाए और डायरेक्टली यू विल गिव टू द इम्प्लीमेंट ऑन पेशेंट्स, इट वोंट हैपन. फर्स्ट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द एक्सपर्ट्स. मॉड्यूल होने के बाद यू हैव टू शेयर दैट यू कैन से गूगल फॉर्म टू द एक्सपर्ट्स. और जितना years of experience होता है, that is good. Like if you are taking 10 years above of experience, that is more helpful. Okay, so when you are taking more years of experience, person validate means approval, and if the person is PhD, or they have done the MD, or they are more towards the clinical, or those who are therapists already but they have above 10 years of experience on clinical side, those people are more authentic or more valid to validate your module. And one more thing, whenever you are validating the module, when you are writing your synopsis or submitting your final paper na, that time you have to show that. So ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल के, मतलब किसी का 1 साल का एक्सपीरियंस है but you are showing that there is a 5 years of experience, ऐसा नहीं है. That will show automatically that graph. After analyzing the data, that will show as a graph or pie chart, and you have to attach that to your synopsis or your final thesis. Okay, so better to take more experienced person's opinion. So when you will that time they'll give the points also. Ki, this practice you have to remove, this practice you have to add, or they will give the score. Scores is always 0, 1, 2. 3, like not required, it is essential, not it's essential, और mild or essential. मतलब होगा तो भी अच्छा है, नहीं देंगे तो भी अच्छा है. और 0 मतलब कि ये बिल्कुल नहीं चाहिए, और एसेंशियल मतलब ये चाहिए ही चाहिए. जैसे कि आस्थमा में प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम चाहिए ही चाहिए, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो दैट इज कम अंडर द एसेंशियल. स्ट्रेट लेग रेजिंग हमें नहीं चाहिए अस्थमा में, तो 0. और अगर आप जो माइल्ड आसनास है, लूजनिंग, अगर ऐसे ये माइल्ड में आ जाएगा, मतलब करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी, बट इट्स ओके टाइप. इस टाइप का स्कोरिंग रहता है. तो वो स्कोरिंग को कैलकुलेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं CVR, कंटेंट वैल्यूटी रेशियो. तो
ये जो है चीज कैलकुलेट होने के बाद, डेटा एनालिसिस होने के बाद पूरा मॉड्यूल आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि आपने 50 प्रैक्टिसेस दिया था आपके सेट में, 50 में से 10 या 15 ज्यादा ऑथेंटिक दिखा रहा है, मतलब एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से, किसने कितना रेटिंग दिया है उसके हिसाब से रेट होता है। ओके, एक मिनट में आपको एक फाइल दिखाती हूँ, सो विल गेट मोर आइडिया। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो इससे बीच में पूछ सकते हैं। बाय द टाइम आई विल ओपन द फोल्डर। मैम जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं वो लाइक जर्नल्स की तरफ से होते हैं या फिर हमें अपने आप से चूज करना होता है? आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं अभी एसवीएसए में हूँ, आई एम स्टडिंग हियर और आई एम डूइंग माय प्रोजेक्ट, सो आई कैन शेयर टू experts of SBSA also, experts from other colleges also, I can share to anyone, like any of other experts. कोई other universities also I can apply, I can send through WhatsApp or I can send through the mail to them. You can see this file now, आप देख सकते हैं सब लोग ये फाइल। यस मैम। हाँ, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, जब आपका अगर जैसे कि आपने 20 टीचर्स का, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया, सो आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट टू एक्सेल शीट एंड यू हैव टू कन्वर्ट टू द ग्राफ। तो जब आप ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं ऐसा आएगा, मतलब ये जो ग्राफ आ रहा है, दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द एक्सपर्ट्स। ओके, क्वालिफिकेशंस क्या है? MSc PhD, MSc योगा, MA BNYS PhD, BMS MSc PhD इन योगा, बायोकेमिस्ट्री, योगा बैकग्राउंड, मोस्टली योगा बैकग्राउंड होना चाहिए। जो भी कोर्स करे वो लोग, दे शुड हैव दैट स्पेसिफिक बैकग्राउंड ऑन दैट। देन कम्स अबाउट ये जो ग्राफ आएगा ना, ये दिस इज द ग्राफ की जेंडर, मतलब कितने मेल थे कितने फीमेल थे, हाउ मेनी वाज द मेल, हाउ मेनी फीमेल स्टाफ्स वाज देयर हु हैज अप्रूव्ड। देयर कम्स द एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको ये बताया कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन लोगों का। ज्यादातर जितना हाई इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा उतना अच्छा रहता है, बट मिनिमम इट शुड बी 5 years, so that will be more better. Okay, then we have to calculate the, that way you can, that will take more time if you'll explain. So you in another class, here you can see there comes the value, जो हम ओपिनियन लेने के बाद वैल्यू आता है ऐसे करके, स्कोरिंग वैल्यूज आता है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड जो माइल्ड एसेंशियल होता है। तो स्कोरिंग होने के बाद, आफ्टर स्कोरिंग द वैल्यूज, तो क्या होता है, देन वी कैन अप्रूव द स्टडी और वी कैन मॉडिफाई आवर मॉड्यूल फॉर द पायलट स्टडी। पायलट स्टडीज मतलब क्या होता है, जब हम वैलिडेशन करते हैं, देन उसका फिजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं, उस टाइम में हम पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी मतलब कम जो हमने जो मॉड्यूल बनाया है, किसी के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट करना है ना कि हमने ठीक किया है या गलत किया है, तो दैट हैव टू डन विद ए स्मॉल सैंपल ग्रुप, मतलब मिनिमम 10 या 15 लोगों का ग्रुप एक लेना है आपको, और आपका जो स्टडी है और योगा मॉड्यूल जो आपने बनाया, उनके ऊपर एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे 6 महीना 3 महीना नहीं चाहिए। ओके, there you need स्मॉल ड्यूरेशन, लाइक आप 1 month के लिए ले सकते हैं या 15 days के लिए ले सकते हैं। पायलट ग्रुप में कंट्रोल नहीं, ओनली सिंगल ग्रुप। नहीं, पायलट स्टडी में आप कंट्रोल ग्रुप भी ले सकते हैं। अगर आपका स्टडी कंट्रोल ग्रुप ऐड हो रहा है, प्रीवियस मतलब RCT अगर आप प्लान किए हैं, और मतलब आपका जो बड़ा स्टडी है, जो मेन स्टडी है, अगर RCT है,
या फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं उसको, या फिर आपका ह्यूज मतलब आपका 2 ग्रुप है ऑलरेडी या 3 ग्रुप है, तो पायलट स्टडी में यू हैव टू टेक 2 ग्रुप। अगर आपने 2 स्टडी ग्रुप का प्लान किया है तो 2 ग्रुप्स लेना है। और अगर एक ग्रुप, सॉरी, ड्यूरेशन ड्यूरेशन कम लेना है। ड्यूरेशन पूरा, जैसे कि आपका मेन स्टडी जो आप प्लान किए हो प्री सिनॉप्सिस फॉर 6 मंथ ऑफ इंटरवेंशन, यहाँ पे पायलट स्टडी के लिए 6 मंथ नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको 1 मंथ चाहिए। ड्यूरेशन पायलट स्टडीज के लिए कम होता है। और इंटरवेंशन आपका जो असेसमेंट है, मतलब जो रिजल्ट आप चेक करते हैं जिसका, वो असेसमेंट भी आपको 1 या 2 लेना है, सारा असेसमेंट नहीं लेना है। जो इम्पोर्टेंट असेसमेंट है वहां से 1 और 2 उठाना है आपको, that you have to take for the pilot study. So for pilot study, what you have prepared the module for short duration, only 1 or 2 important, आप mute कर दीजिए please, 1 or 2 important assessment add करना है। And if you have already in your study plan or your pre-synopsis control group, then you have to take the control group. If you don't have, then you have to add, then no need to add the means अगर आपका प्री पोस्ट स्टडी है, मतलब योगा के बाद और योगा के पहले क्या है, प्री पोस्ट इंटरवेंशन वाला है, then no need to go for the control group. आप बस ग्रुप एग्जाम के पहले, मतलब इंटरवेंशन के पहले और बाद का देख सकते हैं। बट यू हैव इन योर प्लान प्री कंट्रोल ग्रुप है, 2 ग्रुप स्टडी है या 3 ग्रुप स्टडी है, तो पायलट स्टडी आल्सो यू हैव टू टेक फॉर एज ए 2 or 3 groups. Okay. In my major study, it is for the 6 months, and the duration of the practical is 35 minutes. Because it is full routine, it is for 35 minutes. सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है, आप मैसेज टाइप कर सकते हैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स में। I'll repeat again, because I am taking for the school children, class timing is only 5 minutes. So if I take the 35 minutes duration for the 6 months, and I will have class only 1 week, will it be valid? You have 6 month duration intervention for school students. For pilot Yes. study, No, main study. for pilot, if you have 35 minutes for pilot study, also you have to take as a 35 minutes only, but you can convert for a 1 month intervention. But it is 1 week. 1 week, what? No, they will have your week for the 6 months. Can anyone translate me? I can't hear his voice. You can close your camera, then you can speak. Maybe it is your voice is breaking. Okay. I think now it will be clear. A little bit. Yeah. But my question is, my total project will be for the 6 months, and the duration of the practice will be 35 minutes, and frequency will be once in a week. So will it be valid? Okay, once in a week you are taking. No, that is not more helpful, sir. Better to take at least weekly 3 days. Frequency of yoga practice should be good more. But if you don't have any option because you are taking school children, so then Because it is as per the school routine. I cannot change the school routine. okay, so like that, if that type of situations are there, you can mention your study in your study, like as per the school rules, only 1 session was available for yoga class, so I have taken for 6 months 1 hour per week. And if you are doing the pilot study, that is a consider. So don't mention that way, mention 6 month intervention, number of hours calculated or number of days calculate and write it in bracket, like that you have to mention. Okay. In pilot study, I take only 1 group and pre and post. Yes, pre and post. Okay. Any other question? Anybody Yes, have? Can we, Yes. is it possible that we can complete whole PhD with pilot study only? No. That is pilot study till MSc you can do.
For PhD, you have to do RCT. And it means like your one paper from your 3 paper, one should be in RCT. Okay. Okay. Yeah. Ma'am, Experimental. Yes, please. ma'am, mine is MS. Their RCT is not possible. In that case, you can do quasi experimental, right? Yeah, yes. For MSc, you can do till pilot study. Ma'am, what is that? Okay. Okay. Any other question? So first one is the yoga. First, you have to understand the disease. Okay. Then you have to go through the physiology of the disease. Then how it is related to your field. Then comes about the literature review. You have to thorough about literature reviews from the ancient also and both the scientific. After that, you have to plan your module. Sorry, before that, you have to check your assessment also. Assessment and intervention. How many duration? What are the assessment you are seeing? Then go to the yoga module. Like you have to plan first. From you have to take reference from the books and research papers. Plan your make a table form. Then uh, give the give for the validation and feasibility, check or find experts, share to them, take their opinion. After data analysis, what uh, how much practice is they valid or they have validated, that practice format you have to make that yoga module. Then you have to start that on the patients or a healthy individual. That is called pilot study. Then after pilot study, you have to start your main study. That is the full summary of the session. Yes, please ask now. मैम What is अगर that? Yes, अगर हाँ. अगर पहले से जो मॉड्यूल है उसको यूज कर रहे हैं तो तब भी हमको एलसीएन का रेफरेंस लेना है, दिखाना है क्या, वो बता जाता है? For literature review you need that, but if you have already आपका योगा मॉड्यूल है, that is well and good. तो अगर आपका मॉड्यूल है ऑलरेडी, सो नो नीड टू डू पायलट स्टडी, क्योंकि अगर उन्होंने पायलट स्टडी किया है, some papers they will publish, they will do only validation. Okay, but उनका पायलट स्टडी नहीं होता है. अगर only they have done the validation, then you have to do the pilot study, then you have to do your main study. अगर उनका मॉड्यूल वैलिडेशन प्लस पायलट स्टडी हुआ है, then you have to go to your directly you can go for your main study. Okay, ma'am, thank you. Achha, ma'am, I have one question. Yes, please. Actually, in MS, I have 2020, there was a validated yoga module for MS has been published by S. Vyasa Professor Sridhar Palkuru. Yes, And yes. that time till now, he has not published any feasibility study. And I had taken this into my synopsis at the time of interview, and somehow it has got final even in my RDC. So now, after talking to Dr. Sridhar Vyas, Sridhar Palkuru, now I came to know he is already into the research and he has taken intervention for 1 year, and maybe within a 6 months or 3 months he's going to publish his paper also. So today only I had a 1 hour talk with him, and I have taken the same parameter accidentally. And he has taken 30 patients as a experiment group and 30 as a control group. And mine, I have taken a small figure as per my geographical area. So is it okay? Because my synopsis already got passed and my total is already finalized. So if it's just like that, so the university have to speak with them, because if you have already completed your pre-synopsis, but pre-synopsis is not authentic, you have to complete your IEC. After completing the IEC, only they will register in the IEC platform, so that other university will also not do the study. Or how you can do, you can discuss with the sir, and you can mention, if you are doing a PhD now, you be a main author, let him be the co-author also, like you will be giving the name for the publication, like that way you can discuss. Or you have to add some of what do you say, parameters, assessment, or the way of the same module, but the proving the assessment or the
criteria of your study, you have to change later, or you that can is add what some of things. actually that is what we have discussed. As such, there is no biomarker is proved till now. So there is only balance, some balance scale or pain scale or Right. questionnaire only there. And even he has also taken the same thing, and I have also taken the same thing. In fact, we were discussing what parameters I can change or something, but then again, the main thing is the symptoms are these only. So I am not having any fund also, so I cannot take any probable biomarker. Like I have seen 2 articles published on this on ACTH and cortisol, but anyhow it is not proved to say that this can reduce the progress or it has any effect on progress on MS. So only we have scale and questionnaire, nothing else. So in that case, it will be okay if he is ready to get be my guide. Then the same parameter will work. Yes, that will be fine. With that, if you will get fund, or it is if the patient is willing to, because sometimes patient anyway they're doing their biomarkers. Okay, they have to do the biomarkers or some of physiological parameters. You can take their pre and post like that. But then in patients, they I have talked to 3 neurologists also. They are telling we are only yearly once, MRI only we are getting it done. Otherwise, clinically only like this, all scale and clinically only they are checking them. So there is no other biomarker. None of neurologists using. I talked with so many because people. that is So practically expensive, and the radiation is also not in good. fact, I have seen 60, 90 articles. Nobody has taken MRI or CSF fluid because that is, costly also. Even sponsored project people also not taken that parameter. That is the thing. So, you can these, discuss with him and add some of criteria or some of parameters, or you can plan some other additional thing on that to see other effect also. yeah, that is what I am in search of. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, next please. हेलो मैम। Hello. Yes, please. मैम मेरा प्रश्न ये है कि my yoga module is already feasible and validated by as well like MSRT or cyclic meditation. मैम यदि मैं रिसर्च कर रहा हूँ और जैसे कि मैं एसप्लासा से नहीं हूँ या फिर जहाँ से MSRT वैलिडेट हुआ है वहां से मैं नहीं, और मैं MSRT या फिर साइक्लिक मेडिटेशन में से कुछ लेना चाह रहा हूँ अपने रिसर्च में, तो मैम इसमें तो ये सारे प्रोसेस मुझे लगता है करने नहीं पड़ेंगे जो हुए हैं, तो उस दौरान क्या प्रोसेस हो सकता है मैम? मतलब क्या प्रोसेस यदि मैं चाहिए आपको, मतलब जैसे समझ में मुझे नहीं आ रहा। इंक्लूड करना है, मुझे मान लीजिए MSRT, तो क्या एसप्लासा से एफिलिएशन चाहिए होगा कि मैं नहीं इस चीज ऐसा पे? कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ ही ऐड करते हैं तो जो आप रेफरेंस लिखते हैं या फिर ड्यूरिंग द लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन टू योगा ऑन योर टॉपिक, दैट टाइम यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ एसवीएस। जो पेपर में एसवीएस का एमएसआरटी पब्लिश्ड है, दैट रेफरेंस यू हैव टू गिव, दैट इज इनफ। ओके मैम, जिसमें एक रिसर्च पेपर था उसमें मैम पायलट स्टडी थी, मैं उस पे जैसे कि थोड़ा सा रिसर्च डिजाइन जो था थोड़ा सा, मैं जैसे कि उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, जैसे उसमें एक कंट्रोल ग्रुप था और एक इंटरवेंशनल ग्रुप था। मैं 3 ग्रुप ले रहा था, जैसे कि एक को मैंने 3 ग्रुप प्री एंड पोस्ट रिसर्च डिजाइन था, तो इस पे फिर क्या मैं अलग से क्या पायलट स्टडी करनी होती है यदि रिसर्च नहीं, डिजाइन चेंज हो रहा है तो? अगर स्टडी डिजाइन चेंज हो रहा है तो मतलब अगर आप मॉड्यूल सेम यूज कर रहे हो, सो नो नीड टू डू द पायलट स्टडी। अगर आप कॉन्सेप्ट कुछ और ही देखना चाहते हैं पूरा टोटली, देन यू टू डू पायलट स्टडी। और अगर आपका ऑलरेडी वैलिडेट है वो मॉड्यूल और आपके नियर बाई है सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, देन डायरेक्टली यू कैन गो फॉर द मेन स्टडी। ओके मैम, थैंक यू। Anything else? Ma'am, can you repeat that? You said first RSC, after that you said some another you have to pass through. What was that? I just अगर आप जो मॉड्यूल फॉलो करते हैं, whatever your yoga module you are following, if it is already validate and feasibility has done, मतलब pilot study
और वैलिडेशन कंप्लीट हो गया है, then you can go direct to your main study. If only validation हुआ है but no pilot studies happened on that, you can do the pilot study plus your main studies. Okay. No, my question is that when I ask my question, that already one study has been done on MS and my RDC is already done and my topic is final. You said not only initial topic is finalization, there is a next stage, you said. IEC. What was that? IEC. That is called IEC. IEC. Institutional Ethical Clearance. Okay, IEC. Okay, thank you, ma'am. After whatever you are doing study, if you are presenting your pre-synopsis also, it's not like that your study can't copy. Okay, that's why we never share pre-synopsis to anybody else until your IEC is not clear. Don't share your main paper to anyone, because after IEC only will get the license and that will register in the portal. So other university can't do similar type of study. ऐसा नहीं है कि So खाली this Yes. IEC detail we can see on UGC portal? So that your university will provide you. When each university have Okay. the certain rules on the IEC, that depends on the Okay, okay. universities. Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you. So anything else, or we'll conclude the session? Yes. Yes. My question is obesity rather than सर आपका वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आप मैसेज टाइप कर दीजिए प्लीज. मैम कैन आई? यस प्लीज. मैम अगर हम किसी रिसर्च पेपर को हमने पढ़ा, उसमें कोई हमको रिसर्च रेफरेंस मिल रहा है, वो हमको लेना है, तो जो हमने रिसर्च पेपर पढ़ा है हम अपने उसमें जो हम लिख रहे हैं रेफरेंस ले रहे हैं उसमें उस पेपर का लेंगे, या जो हमने वहाँ से उसमें जो रेफरेंस मिल रहा है उसको लेंगे? तो ये दूसरा लेंगे, दूसरा वाला जो सेकंड आप अभी मेरे पेपर में आए आप, पर आपको अगर नागरत्ना दीदी का पेपर मिला, मेरे रेफरेंस है, एंड इन दैट ओनली यू आर फाइंडिंग द मेन पॉइंट. It's you should not give me that reference. Means that authorship means the reference part of you that content. You have to give to another paper. जो नागरत्ना दीदी का पेपर है वो उसको देंगे. ओके. मतलब ओरिजिनल जो रेफरेंस है वही देना है. ओरिजिनल रेफरेंस जो है वही देना है. If you are going direct to there and giving, but if you are taking from my content, then you have to give to the my study reference to the my paper. Okay, then we'll close the session. Yes, राहुल भैया आपको कुछ अगर बोलना है you can please. Yeah, thank you so much प्रियंका. तो कल जो है आज अच्छा सेशन हुआ थेरेपी का, एक अवेयरनेस और एक तरीके से सब लोगों को एक न्यू आइडिया मिला होगा थेरेपी को कैसे आप यूज करोगे में. तो कल का हम सिनॉप्सिस को चेक करूंगा मैं सब लोगों की, ठीक है. जिन्होंने जितना भी काम किया है सबकी सिनॉप्सिस कल इसमें चेक की जाएगी. आप अपना जितना भी आपका बेसिक्स है आप तैयार कर प्रेजेंटेशन में मैं एक एक करके सबकी चेक